मुलाकात किया, इस हवाले से बताएं। मैम केरल से है, वो CPIM का सचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। मेरा हिंदी बहुत बुरा है, सो थोड़ा हिंदी में बोलेगा, बाकी अंग्रेजी में बोलेगा। वो कॉमरेड राज्यसभा का बहुत बड़ी एडवोकेट है हमारा, और तारिगा जी है, वो दोनों ऐड करेगा। ऐसा है, you see the situation here is highly distressing. They have explained to us, you have also seen what a devastating destruction this drone attacks and shelling has created. But now the government has promised only 1,30,000. Even these days you cannot get a proper door or a window. So it's highly deplorable. We register our very strong disagreement with the attitude of the governments. Now, though Mr. Omar Abdullah is the chief minister here, actually this is a centrally governed, it's a union territory. Actually Modi and Amit Shah, they are controlling everything here. Comrade Tarigami reported to us that some important review meetings in J&K, Chief Minister is not being allowed to sit there. It is being conducted with Lieutenant Governor and others. So the democratic process also is being destroyed here. We don't want to go into all those things, what they did with abrogation of Article 370 and reducing the special status state into a not ordinary state but into a union territory. So it's an attack on democratic process. That is also working in the minds of the people. Now, what is most important is that huge destruction has taken place and no compensation is coming. An 8-member family, they have been put in a small room. Single room is being given. They have explained now. So this attitude has to be totally changed. Our parliament members are there from all corners of India, from Bengal, from Kerala, Tamil Nadu, then from Rajasthan. They are all there. Party, CPIM leaders are there. We would be taking it up very seriously. We wanted a special session of parliament to discuss all these things. You see the plight of the people in the border areas. But Prime Minister is refusing to do that. Prime Minister did not even attend 2 all-party meetings. In one all-party meeting, our friend was present, but Prime Minister was not present. He was going and giving lectures. So just rhetoric of the Prime Minister will not compensate for what the people have suffered. So मैं बोला मेरा हिंदी बहुत बुरा है, लेकिन आप सबको मालूम ये डिस्ट्रक्शन के बाद जो जेन्युइन कॉम्पनसेशन देना है वो नहीं आता है. सिर्फ 1,30,000 रुपया कॉम्पनसेशन के रूप में आता है, वो बहुत ही कमी है. सो लीडर्स लिख करके पूछता है, हम पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में ये उठाएगा. टेम्पररी अरेंजमेंट, तात्कालिक अरेंजमेंट वो किया. एक छोटा सी कमरे में 8 आदमियों का रिहैबिलिटेशन के रूप में भेजता है. ये भी बहुत ही बुरा काम है. यहाँ स्टेट का पूरा अधिकार नहीं है. जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का रूप में रहता है. स्पेशल स्टेटस स्टेट था, अभी यूनियन टेरिटरी का रूप में है. यहाँ पूरा अधिकार मोदी और अमित शाह का पास है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए वो आना पड़ेगा. यहाँ रोड बहुत बुरा है. यहाँ बंगर निर्माण करना है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में है. सब अटैक यहाँ होगा, इसलिए वो अपना आवश्यकता एक बंगर यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का आवश्यकता भी रहा. हमारा पार्लियामेंट मेंबर्स पार्लियामेंट में दोनों सभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में ये इश्यूज टेकअप करेगा.